दिस इज आवर सेशन 38। लास्ट सेशन में हमने ये समझा था कि प्रॉफिट सेंटर हायरार्की क्या होती है, प्रॉफिट सेंटर ग्रुप्स क्या होते हैं, प्रॉफिट सेंटर क्या होते हैं। राइट, हमने इसको एक्सेल शीट पे देखा था। अब हम इसे एसएपी में देखते हैं। अब बिकॉज लोकल डेस्कटॉप पे हमारा लॉगिन नहीं हो रहा है, इसलिए हम फिर से रिमोट डेस्कटॉप पे आगे के कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। व्हाट वी विल डू, हम पहले कॉस्ट एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं। अब हमने देखा था कि ओनली प्रॉफिट एंड लॉस वाले अकाउंट्स एज अ कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट किए जा सकते हैं। जो एक्सपेंस अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होते हैं वो कंट्रोलिंग में जाके कॉस्ट एलिमेंट बनते हैं, एंड जो रेवेन्यू अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रहते हैं वो कंट्रोलिंग में जाके रेवेन्यू एलिमेंट बन जाते हैं। नाउ लेट अस क्रिएट वन एक्सपेंस अकाउंट इन जीएल मास्टर डेटा स्लैश एन एफ एस डबल जीरो, या तो अगर आप यहाँ से भी जाओगे इजी एक्सेस से, कंट्रोलिंग, कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग, मास्टर डेटा, कॉस्ट एलिमेंट, individual processing fs double zero, double click on it, change the company code. We are creating salary account, operating expenses 411 all zeros. अब जब नॉर्मली हम इस अकाउंट को क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम सेलेक्ट करते हैं, बट दिस टाइम हम इस अकाउंट को एज अ कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि इस अकाउंट के वैल्यूज कंट्रोलिंग मॉड्यूल में भी फ्लो करेंगे। फॉर दैट हम प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। Account group is operating expenses. अब जब आप किसी भी अकाउंट को एज अ कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट करते हो, कंट्रोल डेटा टैब में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी। इफ यू ओपन द लिस्ट, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट एलिमेंट्स दिख रहे हैं। नाउ वी आर क्रिएटिंग प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट, therefore we will select primary cost or cost reducing revenues. I will go back to type description. अब हम देखते हैं कि इन केस अगर हमने प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया तो उस केस में क्या चेंज होता है, या कोई चेंज नहीं होगा, हम इसे देखते हैं। अब कंट्रोल डेटा टैब में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। हाँ सर, क्या चेंज हुआ है? अकाउंट मैनेजमेंट के इसमें जब हमने प्राइमरी कॉस्ट एंड रेवेन्यू सिलेक्ट किया था, हमें यहाँ पे कॉस्ट एलिमेंट एंटर करने के लिए एक ऑप्शन आ रहा था। हाँ अब जब हमने फिर से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम सेलेक्ट किया तो वो जो ऑप्शन था वो चला गया। जी सर। राइट, सो मेक श्योर कि अगर आप कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट कर रहे हो
तो आप प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू वाला अकाउंट टाइप सिलेक्ट करो। कंट्रोल डेटा टैब, अकाउंट सेटिंग्स फॉर कंट्रोलिंग एरिया HNMT, cost element category is 1, go to create bank interest, field status group is G004, cost accounts. Now save this. We will create one more account. Let's say repairs and maintenance. 411 all zeros 2. मैं इसी को कॉपी कर लूंगा। 411 all zeros 2. Control data tab, this will be same. Cost element category 1 and field status group will be G004. Save this. अब कॉस्ट एलिमेंट्स क्रिएट हो गए। जब ईसीसी में कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट करने होते थे तो वो इतना इजी नहीं था, हमें एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता था कॉस्ट एलिमेंट का। बट एस फॉर हाना में बिकॉज कॉस्ट एलिमेंट जीएल मास्टर डेटा में इंट्रोड्यूस हुए हैं, हमें सिर्फ अकाउंट टाइप चेंज करना होता है एंड वी हैव टू असाइन द कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी एंड फील्ड स्टेटस ग्रुप एज कॉस्ट अकाउंट्स। अब इतना करने के बाद गो बैक। जब हम कंट्रोलिंग एरिया डिफाइन कर रहे थे, to define controlling area, transaction code is OKKP. For this company code, we defined something called as cost center hierarchy. Ab, this cost center hierarchy is the highest node to which cost center groups and cost centers are assigned. ठीक है, this is like a branch. पहला branch होगा this cost center hierarchy, then उसके नीचे आएगा cost center groups and then cost centers. Go back. /n spro SAP reference IMG controlling cost center accounting master data cost centers. अब यहाँ पे एक ऑप्शन है which is define cost center categories. Let us go into this. अब by default यहाँ पे multiple cost center categories provided है. This cost center category is nothing but small groups of cost centers which belong to the similar category. जैसे कि development, तो इसमें we can say research and development, laboratory, okay. मैन्युफैक्चरिंग में अगेन हमने जैसे कल एक प्रोडक्शन वाला एग्जांपल लिया था,
cutting production, then painting production, assembly production, मार्केटिंग में अगेन डिजिटल मार्केटिंग्स, लोकल कैंपिंग्स। तो ऐसे ही जो कॉस्ट सेंटर्स सिमिलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनके लिए हम ये कॉस्ट सेंटर कैटेगरी यूज करेंगे। एंड इसमें यहाँ पे कुछ कॉलम्स दिए गए हैं। क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल सेकेंडरी कॉस्ट, एक्चुअल रेवेन्यू, प्लान प्राइमरी कॉस्ट, प्लान रेवेन्यू कॉस्ट। अब इसमें प्लान रेवेन्यू कॉस्ट बाय डिफॉल्ट टिक्ड होगा। वी विल गो बैक, अगेन बैक। In easy access screen, go to SAP Controlling, Cost Center Accounting, Master Data, Standard Hierarchy, and Change. अब यहाँ पे we have two options. One is Cost Center, one is Cost Center Group. If you see on the right side, Standard Hierarchy, this is our Standard Hierarchy, HNMT underscore CCH. ये हमने कंट्रोलिंग एरिया में डिफाइन किया था। यहाँ पे हमें ग्रुप नेम मिल रहा है विच इज HNMT CCH। हम यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। Cost center standard hierarchy for HNMT. Enter and save. अब चेंज डेटा में आपको ये दिखेगा कि इस स्टैंडर्ड हायरार्की को किसने क्रिएट किया है, किस दिन पे क्रिएट किया है एंड कब क्रिएट किया है। लेट अस ओके, अब हमने स्टैंडर्ड हायरार्की क्रिएट कर ली। नाउ लेट अस क्रिएट कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स। गो बैक, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स KSH1। क्लिक ऑन क्रिएट। अब लेट्स से जो हम कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स क्रिएट करेंगे उसे हमें नेमिंग कन्वेंशन देना पड़ेगा। ओके, यानी कि लॉजिकल कोड देना पड़ेगा। अब जो हमारा कॉस्ट सेंटर स्टैंडर्ड हायरार्की है दैट इज CCH अंडरस्कोर HNMT। फॉर प्रोडक्शन वी विल यूज HN, लेट्स से 001। दिस इज फॉर कॉस्ट सेंटर ग्रुप 1। सिमिलरली लॉजिस्टिक्स के लिए we will use HN002, recruitment will be HN003 and so on. Let us go to SAP. Cost center group will be HN001. Enter, description ऐड करो यहाँ पे।
This is production. Save this. Changes have been saved. अब ये एक तरीका हो गया कॉल सेंटर ग्रुप्स क्रिएट करने का. Let us go back, again back, standard hierarchy, change. Other way is in the standard hierarchy only, you have an option to create. Click on this small arrow icon. Up. First, you have to select this standard hierarchy. Then click on this drop down or this arrow. आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं. One is lower level group and one is cost center. Now we want to create cost center category या cost center group first and उसके बाद हम cost centers create करेंगे. So we will select lower level group. Now lower level group means स्टैंडर्ड हायरार्की से एक लेवल नीचे हमें कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स क्रिएट करने हैं. ग्रुप नेम इज HN001 and this is production. Enter. It is saying group HN001 already exists. Okay. Cancel this. Now what we have to do is जो हमने कॉस्ट सेंटर ग्रुप क्रिएट किया था उस कॉस्ट सेंटर ग्रुप को हमें इस स्टैंडर्ड हायरार्की को असाइन करना पड़ेगा. कॉस्ट सेंटर ग्रुप इज HN001. Just 1 second. This is cost center standard hierarchy and this is our cost center. Sorry, this is our cost center group HN001. Select this, invalid change to an alternative hierarchy. All right.
तो यहाँ पे हमें असाइनमेंट करने के लिए एसएपी अलाउ नहीं कर रहा है. वी विल गो बैक. लेट्स से यस. कॉस्ट सेंटर ग्रुप चेंज एंटर. Select this cost center group and I will delete it. Okay, object HN001 deleted. Go back. Go to standard hierarchy. Change. Select your standard hierarchy. Click on drop down. Click on lower level. अब यहाँ पे हम फिर से cost center group create करेंगे which is HN001. This is for production. Enter. अब below cost center standard hierarchy हमें cost center group मिल गया. This is for production. अब similarly हम और दो कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स क्रिएट करेंगे एज पर द एग्जाम्पल जो हमने कल देखा था. वन इज लॉजिस्टिक्स एंड अदर इज रिक्रूटमेंट. सिलेक्ट स्टैंडर्ड हायरार्की. गो टू दिस ऑप्शन. लोअर लेवल ग्रुप. दिस इज लॉजिस्टिक्स. HN002. एंटर. सेकेंड कॉस्ट सेंटर ग्रुप क्रिएट हो गया. अगेन सिलेक्ट. ओके. अब जब आप स्टैंडर्ड हायरार्की सिलेक्ट करते हो एंड व्हेन यू सिलेक्ट दिस लोअर लेवल ग्रुप तो एक लेवल नीचे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं. I will select this cost center group this time and हमें एक और ऑप्शन मिलेगा group at same level. If you select this HN003, this is for let's say this is human resource. Press enter. Now we have production, we have logistics, we have human resource. Now if you see हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है sequence to change the sequence. Now I want this HN001 to reflect on the first line, HN002 on the second line, and HN003 on the third line. Select HN001, move up, again move up. Okay, अब sequence ascending order में आ गया. अब मुझे cost center create करना है. I will save this.
अगेन कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करने के लिए you can create directly from this screen, or you can go out and you can select cost centers, individual processing, create. Now again for the cost centers also हमें कुछ लॉजिकल कोड देना पड़ेगा, लॉजिकल सीक्वेंस देना पड़ेगा. For production we used HN001 as the code. Now for the cost centers under this cost center group, which is production, we will use HN001. First two characters will represent company code. Next three characters will represent cost center group. And after that, next four characters 1001. Yeah, we can say 1000. This will represent our actual cost center. ठीक है, ये नेमिंग कन्वेंशन समझ गए? यस सर, समझ गए हम। Okay. Similarly, for painting, HN001 and 1001. Production के लिए HN001 1002. Let us create this cost center first. Cost center is HN001 1000. Valid from, let's say, valid from first day of the year 01 04 2025. Press enter. Name is, this is cutting. Description also cutting. Person responsible, we can say अजित. अब इस अजित के लिए एक यूजर आईडी क्रिएट होगा. That user ID you will enter here for user responsible. Cost center category. Now this is production cost center. So create category as production. Hierarchy area. It was CCH underscore, okay, HNMT underscore CCH. अब यहाँ पे और एक ऑप्शन आ रहा है टू एंटर द प्रॉफिट सेंटर. जब हम प्रॉफिट सेंटर्स क्रिएट करेंगे हमें उन प्रॉफिट सेंटर्स को कॉस्ट सेंटर मास्टर डेटा से लिंक करना होता है. सो वंस वी क्रिएट इट हम उसे यहाँ पे असाइन कर देंगे. सेव दिस. ओके. Now if you go back again to standard hierarchy, now this is our standard hierarchy. इसके अंडर if you see directly cost centers इस वाले लेवल पे क्रिएट हो गया डायरेक्टली अंडर द कॉस्ट सेंटर हायरार्की. बट वी वांट दिस कॉस्ट सेंटर टू बी क्रिएटेड अंडर प्रोडक्शन. We will select this cost center. Okay. Okay. Now if we want to
create this cost center under production. नो अदर ऑप्शन, हमें इसे डिलीट करना पड़ेगा एंड हमें इसे स्टैंडर्ड हायरार्की वाली स्क्रीन पे फिर से क्रिएट करना पड़ेगा. Let us check if we have any option. Okay. Select this HN001, one level up. Okay, nothing is happening. Go back. Cost center, individual processing, and delete. Cost center is HN001100. Make a test run to check if everything is working properly. This is our cost center. Go back. Remove this test run. Execute. Are you sure you want to delete the selected cost centers? Yes. Standard hierarchy. Select the cost center group as production. Create cost center. अब यहाँ पे भी हमें सेम ऑप्शंस आ रहे हैं जो कॉस्ट सेंटर क्रिएशन वाली स्क्रीन पे आ रहे थे. कॉस्ट सेंटर इज HN001100. Cost center name is cutting. Description is also cutting. Person responsible, Ajit. Cost center category is production. अब जब हम यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर रहे हैं तो ये जो बिजनेस एरिया, फंक्शनल एरिया, करेंसी एंड प्रॉफिट सेंटर वाला ऑप्शन है, ये हमें ऑर्गेनाइजेशन टैब में आ रहा है. डायरेक्टली जब हम कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करते हैं तब ये दो टैब्स मर्ज हो जाते हैं एंड बेसिक डेटा में ही हम सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं. इफ यू सी दिस इंडिकेटर्स, यहाँ पे एक्चुअल रेवेन्यूज एंड प्लान रेवेन्यूज टिक किए गए हैं. दिस इज कमिंग फ्रॉम कॉस्ट सेंटर कैटेगरी. Templates and all, we will not use it. Now save this. Up, we have created a cost center under cost center group HN001. अब similarly हम second cost center create करते हैं. Select cost center HN00110001. This is painting. Person responsible, let's say Rahul. Department, we will, अगर आपको एंटर करना है आप कर सकते हो. Let's say production. Cost center category is again production. This we are not using for now. Save this. Painting वाला cost center भी create हो गया. And if you see the activation status, it is in active status. Again, create cost center HN00110002. Name is assembly.
user responsible, and person responsible. Person responsible, let's say Rehan. Department is again production, and cost center category is F. Save this as well. Data has been saved. Ab under this standard hierarchy HNMT underscore CCH, we have three cost center groups. In cost center group HN001, we have three cost centers. ये समझ आ गया? Yes, sir. Now what we will do is we will create profit center hierarchy in the similar way. Close cost center accounting, go to profit center accounting, master data, profit center, no, master data standard hierarchy, and create. Now this is profit center group. Go back. SPRO, IMG, controlling. Then there is profit center accounting, master data, profit center, define standard hierarchy. Okay. Controlling profit center accounting basic settings. Set controlling area. First, we will have to define these settings. Set controlling area. Our controlling area is HNMT. Next is controlling area settings. In this, maintain controlling area settings. Standard hierarchy is HNMT underscore PCH, profit center hierarchy. Click on this indicator. Profit center local currency type is controlling area currency 20. Select this, confirm, and activate this 2025 year. Click on this indicator. Okay, now save this, go back. अब हम फिर से स्टैंडर्ड हायरार्की डिफाइन करते हैं /n profit center accounting, master data, standard hierarchy, and create. This is our standard hierarchy. Press enter. The object already exists. Yes. Profit center standard hierarchy for HNMT.
Save this pack. I'll just try this change option. अब अंडर दिस प्रॉफिट सेंटर हायरार्की हमें प्रॉफिट सेंटर ग्रुप्स क्रिएट करने हैं. आवर फर्स्ट ग्रुप इज ईवी. अगेन हमें इसके लिए एक नेमिंग कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा. नाउ लेट अस यूज लेट्स से okay, let us use HP001. Now this H represents company code. We will add N as well. HNP001. HN represents company code. P represents profit center. 001 represents profit center group number. Similarly, HNP002, HNP003 and HNP004. Profit centers will be HNP001, 1, 0. How much is this? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's say 101. HNP001, 102. Or this is 101 and this is 100. इसका लॉजिक समझ आ गया? हाँ सर समझ गया. ठीक. Now this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Let us just check कि हम कितने characters enter कर सकते हैं while creating this cost centers. Sorry, while creating the profit centers. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Fine. Similarly, HNP002, 100, HNP002, 101, HNP003, 102. HNP004, 100, HNP004, 101,
दिस इज HNP 004 102। ठीक है, अब दिस इज एन एग्जाम्पल। हम सारे प्रॉफिट सेंटर्स क्रिएट नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक या दो प्रॉफिट सेंटर्स क्रिएट करके समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। इफ यू वांट यू कैन क्रिएट मोर प्रॉफिट सेंटर्स। गो टू एसएपी। अगेन हमारे पास प्रॉफिट सेंटर हायरार्की है। Go to create lower level group. This is HNP 001. This is EV. Okay, again we will create one more cost center group. No, select this standard hierarchy and then click on lower level group. अगर आप बिना कुछ सिलेक्ट किए हुए लोअर लेवल पे क्लिक करोगे तो एसएपी समझेगा कि आपको इस कॉस्ट सेंटर ग्रुप से एक लेवल नीचे कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। Now, if I create, like if I select this cost center group and if I click on lower level group, it is taking me one level down. But हमें again cost center group create करना है at the same level as this cost center group. So either you can select this and click on group at similar level, or else you can select standard hierarchy and click on group at lower level. Clear है इतना? Yes, sir. Okay. Group at same level. Now this is HNP 002. This is for motorcycles. Enter. Now we have created two profit center groups. Now in the profit center 1, which is EV, हम profit centers create करते हैं. Under the profit center group EV, we are creating profit centers. Now profit center is HNP 001 100. This is HNP 001 100. First two characters representing company code. Next character representing profit center. Next three characters representing profit center number. And next three characters representing profit centers. यहाँ पे भी HN 001 1000. First two representing company code. Next three representing cost centers. And next four representing, sorry, first two representing company code, next two representing cost center groups, and next four representing cost centers. अब for the cost centers we took four characters because cost centers की कोई लिमिट नहीं होती, राइट? जैसे जैसे कॉस्ट आएगा कंपनी में वैसे वैसे हमें कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करने पड़ेंगे फॉर एवरी कॉस्ट जिसका वैल्यू हमें कंट्रोलिंग में फ्लो करना है।
हमें उस कॉस्ट के लिए कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट या हमें उन सारे कॉस्ट के लिए उन सारे एक्सपेंसेस के लिए कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करने पड़ेंगे. सो देयर इज नो लिमिट टू द कॉस्ट सेंटर्स, लेकिन फॉर द प्रॉफिट सेंटर्स अब जो कंपनी प्रोडक्ट्स क्रिएट करेगी दैट विल बी लिमिटेड, राइट? ऐसा नहीं होगा कि कंपनी अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकती है. द क्वांटिटी विल डिफर, लेकिन जो प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं, जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स होंगे वो लिमिटेड होंगे. सो प्रॉफिट सेंटर्स विल बी लिमिटेड. देयरफॉर वी आर यूजिंग 3 कैरेक्टर्स. अब ये डिपेंड करता है, इफ यू वांट यू कैन यूज 4 कैरेक्टर्स एज वेल. मैंने सिर्फ जो कैरेक्टर लिमिटेशन था उसकी वजह से 3 कैरेक्टर्स यूज किए. नाउ दिस कॉस्ट सेंटर इज HNP. This profit center is HNP 000110. Name is Activa E. Long text is also Activa E. Person responsible, let's say Sanjay. Department, this is sales. No segments. Okay. Indicators में nothing again. In the company code, our company code Honda Motors is assigned. Press enter and save this. पहला profit center create हो गया, but the activation status is red, meaning ये profit center inactive है. Let us create one more profit center in the same profit center group. HN001 1001. I'm sorry, 101. This is what was the product? QC1. Person responsible, again, let's say Sanjay. Department is sales.